Okay, so you will not be able to find a small notebook that your friend asked or elder asked to pick up from the room. Okay, so it's simply a convolution filter. The convolution in the network cannot tell you whether it's a cow there or not if the network is designed such that it cannot see the cow. Okay, so one of the basic factor to control that is the receptor field, and we can control that using convolution filter size. Let me show you what I mean. So think about an input signal, one-dimensional signal, and we have a filter which is 3 cross 1. Okay, and we are convolving them together. Okay, and output is a filter again. So you can see that this filter has much less size than this one because on padding Nikki, we are not doing any padding. So this guy has a much less size than this guy. Okay, and actually we cannot say much less. We actually can compute the size decrease in size. है ना? You guys can compute that. क्या आपको कोई Okay, so this is the exact formula. I hope you guys are following the reading material we're providing. उसके अंदर direct mathematics मौजूद है. You guys can have a look at that. Have a read. उसको पढ़ें, इसको दाखिल हो जाएगा कि आप क्या क्या चाह रहे हैं. Okay, so let me give you an idea. So for example, if this guy is a filter, this O is produced when I convolve this filter to these elements F, G, H. Okay, this one is produced when I convolve this F. This one is produced by the convolution of this guy with this one. Okay, so at this layer, the receptive field of this convolution, the receptive field here is just 3 elements. अगर फिल्टर का साइज बड़ा कर दूं 10 कर दूं तो ये इसके receptive field 10 हो जाएगी. Okay, okay. So what happens if I have another layer? If suppose I have another layer and I have again 3 cross 1 filter, some other 3 cross 1 filter, and I convolve this output by this guy. So the K here, it will be produced by these 3 elements. Okay, P Q O. Okay, Q P O लिखा हुआ है. But it will be produced by these 3 elements. इनके साथ linear combination से ये K produce होगा. Okay. However, the receptive field of this guy is actually this one. Why? Because this guy depends upon the computation, that is the linear combination of Q, P, O, and Q was produced a linear combination of D, E, F, P was produced a linear combination of E, F, G, O was produced is a linear combination of F, G, H. So in hence, actually, the result of K, the why K was produced was because of the information which was contained in these elements. D, E, F, G, H. Okay, so this guy had a receptive field of 3. This guy had a receptive information from only 3 elements here, but receptive field is 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so as I increase my depth, okay, as I increase my depth, my receptive field will increase even if my filters are same size. Okay, so the filter size was 3 here, the filter size was 3 here. If I keep adding the filters here, more the 3, even if I keep adding more layers here, even the filters are of same size, my receptive field will start increasing. Okay, same is the case with the pooling. Okay, since in pooling we are doing subsampling, we are decreasing number of outputs from here. Okay, so the pooling operation is actually increasing the receptive. How it is increasing? Because this guy has a receptive field of this one. Okay, and this guy has the field of from here to here. Okay, since we are pooling, so this is doing the max operation or min operation or mean operation. It's actually the resultant of information captured with this and this element. And because these guys have the receptive field from here to here and here to here, the overall receptive field of this element is from here to here. So this means this guy is going to change if I change one of the elements here. So it's not, there will be no effect on this guy if I change A or if I change M. Okay, अगर मैं A को change कर दूं और M को change कर दूं, this guy is not going to change. Okay. Okay. However, if I change the elements of these, then there is a chance that this guy will change. Okay, depending on the filters, depending on the pooling. Okay, so this is a receptive effect concept of receptive field. Okay, that this guy is a product of operations on all of these ones only, nothing more than that. Okay. Any questions still here? No. Okay. Is my T, guys? T.
can you set up the quiz? Set. A में करूँ, B में करूँ, this guy will have no effect. Okay. Okay. So putting it helps further increasing receptive field. That's why when you're putting your subsampling, you're decreasing the feature volume. Sorry, you're spatially decreasing the feature volume. But actually, what you're doing is that you start to make it look to much bigger window in main image. Okay. Okay. So we have mathematical formulas. We didn't put this on slides. हम लोग slides update कर देंगे. There are mathematical formulas. We can look at them in next class. Okay. So in images, so we are looking at just one plus one. So this is what we're talking about when we're talking about in convolutions in an image. Okay. So this guy was produced as a linear combination of this information. Okay. This guy was produced as a linear combination of this information and then non-linearity applied. This guy is actually a result of all of this information, which effect is a product of the result of all of this information. Okay, so even when the filter size is same, this guy is looking at much bigger receptive field than this guy. Okay, okay. So what it makes difference is this one. So if you have a convolution filter here, it will be looking at only this information. Small patches को देख रहा होगा, छोटी-छोटी चीजों को देख रहा होगा. ठीक है, 3x3 के एरिया को देख रहा होगा या 5x5 के एरिया को देख रहा होगा. जब आप 5x5 के एरिया को देखेंगे तो आप क्या देखेंगे? आप एजेस देखेंगे, आप ये बोर्ड लाइक फिल्टर्स देखेंगे, आप कर्व्स साइज देख लें, आप शिफ्टेड लाइंस देख लें, इस तरह की चीज देख लें, आप चेंजिंग कलर देख लें. If you're using an image and your filters are of a depth tree, then change in color dimensions might be you're looking at. Okay, so when I'm increasing my depth actually, so my receptive field is increasing. So receptive field increase can say okay, suddenly I'm looking at much bigger areas. Okay, so let's go back to this image. Let me make a sense out of this. So for example, if I'm let me go to the pen so that I can so if I'm making a small filter, okay, तो वो क्या देखेगा? वो इस तरह कुछ पैच देखेगा. Okay. इससे क्या आ सकता है? इससे टेक्सचर आ जाए. ओके, ठीक है, इसमें हो सकता है सिर्फ टेक्सचर आ जाए, नथिंग मोर देन दैट. ठीक है, अब 3x3 में क्या कर सकते हैं? ठीक है, 3x3 के अंदर स्मूथिंग फिल्टर हो सकता है, टेक्सचर हो सकता है, कलर डिफरेंशिएशन हो सकती है. ठीक है, so I can have filters such as first channel is -1 -1 -1 -1 -1 -1. Yeah, that's sort of figure right using mouse. Okay, and इसका other channel होगा 0, for example, all the zeros, and the third channel will be all the ones. So it is like the difference between the two channels. That could be the filter, or it could be the filter that is looking at only यहाँ पे सारे zeros होंगे और यहाँ पे सारे ones होंगे. ठीक है, or it could be कि यहाँ पे सारे ones होंगे और यहाँ पे सारे -1s होंगे. Okay, it would be looking at diagonal. It could be all those variations, but it would be those all variations are more related towards the texture. Okay, because उनका information ही वहाँ पे इतनी आ रही है. So as a receptive field increases, suddenly I start having the much bigger information. Okay, suddenly I start having much bigger information. Okay, okay, उससे बड़ी receptive field होगी, I start having the a question. एक चीज में complete कर दे. ठीक है, so even bigger receptive fields might capture this thing. Okay, ठीक है, so change of receptive field allows me the different portions to see. अगर मेरे तमाम के तमाम animals जो है वो आता ही 50 से 50 के एरिया के अंदर है, तो मेरी छोटी receptive field से I will not be able to capture that information. Okay, this thing is more visible in this one. So if I train a neural network such that on the face images, okay, the initial filters will capture all of these board-like structures. Okay, edges, changing edges, कहते हैं मोटाई उनकी, widths उनकी, location उनकी, all of this information. As I move towards the middle one, my receptive field is becoming larger now. Okay, so अब वो बड़ी होती जा रही receptive field start getting the nose and eyes and blobs resulting to the mouth and stuff like that. अब आगे बढ़े receptive field और बड़ी हुई है. Now receptive field is looking at the half of the face, yeah, more than that. So I'll start getting those parts of face, okay? Head and eyes and mouth, stuff like that, ears and eyes, stuff like that. Okay, so my receptive field is increasing. The receptive field here is low. So receptive field here is low.
I only can see small parts. Receptor field is becoming slightly better. थोड़ी बड़ी हो गई है. It start looking at the कहते हैं interesting information. Receptor field यहाँ बहुत बड़ी हो गई है. चेहरे नजर आना शुरू हो गए. So I cannot detect faces at here. I cannot detect faces here. To detect faces, to see where the face is, to localize where the face is, I need to have a receptor field of this size. Okay, there's a question there. सर इसमें का जो रिसेप्टिव फील्ड है वो हमारे नंबर ऑफ लेयर्स पे डिपेंड करती है या फिर फिल्टर साइज पे भी? अगर फिल्टर साइज हमारा बड़ा हो तो उसमें दोनों के ऊपर ना आप अगर देखें तो हमने यहाँ क्या किया है कि यहाँ पे फिल्टर का साइज, अगर मेरा फिल्टर साइज यहाँ पे, अगर यहाँ पे फिल्टर अगर मेरा फिल्टर साइज यहाँ पे 10 होता, यहाँ पे फिल्टर साइज 10 होता, यहाँ पे रिसेप्टर फील्ड 10 हो जाती. मगर मैं अपने फिल्टर साइज को, नंबर ऑफ लेयर्स को इंक्रीज कर दिया, रिसेप्टर फील्ड को चेंज नहीं किया, तो मेरी कहते हैं मेरी रिसेप्टर फील्ड बड़ी हो गई. ठीक है. So filter size यहाँ पे 3/3 था, यहाँ पे 3/3 था. ठीक है. बट नंबर लेयर्स इंक्रीज करने से मेरी रिसेप्टर फील्ड बड़ी हो गई. Okay. Thanks. So I can change my receptor field by changing either the filter size or increasing the depth. Okay. So I can change my receptor field by changing the filter size or changing the depth. But problem is if I change my depth, if I increase my depth, my number of parameters is going to increase. Yes. Sir, so how do we decide that whether we have to increase the size of the filter or we have to increase the depth? Remain with me. आप अब मेरे साथ remain with me. Okay. Okay. हाँ से आंसर करेंगे, but you have to be with me. Okay. So for example, this image you're looking at, this slide you're looking at. So you have this input. So this guy has a receptor field of 5/5 because 3/3 है. आप लोग घर जाके या घर में बैठे में आप कागज के ऊपर इसको करके देख सकते हैं कि 5/5 आती है कि नहीं आती. ठीक है. Okay. Anyhow, so this guy is actually looking at this portion. Okay. But problem is that number of parameters have increased. So I can actually just increase the size of my filter and have same receptor field. है ना? But problem is this guy is shallow and this guy is deep. Okay. So what shallow means is that the features here, even if they have a receptor field of 5/5 as this one, are just a linear combination of inputs in this case. Okay. In this case, this guy is an output of just linear combination of input, nothing more than that. Okay, very simple feature function. Whereas in this case, the deep के अंदर तो यहाँ पे feature की value आ रही. This is a result of linear combination of features which have come from the application of non-linearity applied on linear combination of inputs. So this guy is produced because we did the linear combination of these features, and these guys are produced because they were the linear combination from these features. है ना? So this depth की वजह से complexity भी increase कर दी है. The combination of relationships it can represent has also increased. Okay, it's linear combination only. क्या कर सकते हैं? जैसे ये मौजूद है या नहीं है, ये चीज बता सकता है. This can have a much more complex relationship. Okay, so this has developed the hierarchy. So I like this one in comparison to this one. Shallow is, even if I'm increasing the size of my receptor field, if my network is shallow, it might not be a good recall. It might not be a good classifier. सर Yep. सर ये जो ऊपर वाला डीप वाला है ये तो ये होगा कि लीनियर का लीनियर होगा, तो ये इसमें नॉन लीनियरिटी कहाँ पे आ रही है? मैंने यहाँ पे नॉन लीनियरिटी लगा. I'm not sure, like I it's a drawing, so I didn't show it. So you can assume that after every convolution you have a non linearity. सर नॉन लीनियरिटी कैसे हम लेके आ सकते हैं? मतलब आप सिग्मॉइड लगा दें. आप लोग आप ठीक है, कोई एक्टिवेशन फंक्शन लगा दें, कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन. ठीक है सर, थैंक यू. Okay. So हमने non-linearities यहाँ पे we're assuming कि non-linearities लगी हुई हैं यहाँ पे. Okay, we're assuming से non-linearities लगी हुई हैं. तो अगली convolution से जाने से पहले non-linearity यहाँ पे लगी हुई है. So I'm just trying to say is that this guy is a product of a linear combination of these guys. So this filter applies here. It produces one value which is a linear combination of these guys. These guys are the result of non-linearity applied of the linear combination of this information. है ना? ठीक है सर, इसका मतलब हम शैलो भी अगर कोई एक्टिवेशन फंक्शन लगाएं तो भी फिर डीप बन जाएगा? नहीं, शैलो से it would be non-linear function, but that would be non-linearity only on the one linear combination of it. देखिए, each filter is just one linear combination ना इनका.
ओके ठीक है, अगर आपने नॉन लिनियरिटी लगा भी दी है तो उसके बाद ही लगी है। ठीक है सर, थैंक यू। Let me show you. Actually, I can show you in this way. So think about this. No, not highlighted. The one, pen. Yeah. So this guy is actually F is actually a linear combination of one, two, three. HI. Okay. Okay. So this means that actually what happens is that there was H1, H2, H3. इसके नीचे there were features of input. Okay. Okay. So H1 applied on this one, H2 applied on this one, H3 applied on this one. You get certain values. You use them to create F. Okay. I'm making it worse. I'm making it much more worse. So let me try it again with much more simpler mechanism. Okay. So this guy. So I applied this filter on this one. Okay. I get one value here. Apply this one on this one, I get one value behind it. I get then apply this one to this one, I get one value here and here and here. Okay, so these all are what? These all are linear combinations of this guy, and then we applied the non-linearity over it. Okay, so non-linearity doesn't care about कि यहाँ पे क्या information capture हुई थी ना. Non-linearity is applied only on the output this one. Okay, ठीक है, सही है. So it only can give you a small amount of interaction of values here only. Okay, ठीक है. However, when I apply this guy, Hello. When I apply, yeah. Sir, pointer नजर ही नहीं आ रहा था. Oh, okay. Yeah, point. Actually, they have to change with the pointer and the. Okay, can you see it now? Can you see my mouse? No, sir. No, sir. No. No, sir. Okay, so each feature matrix here, each feature channel is a linear combination of values coming from here and non-linearity applied only on this information. So this guy has nothing to do with the value that is coming from here, or the value or the relationship that exists here, or the relationships that exist here. Okay, okay. Similar to the case here. This guy is only the product of output of this information, the linear combination produced by this filter. Nothing more than that. Okay, and non-linearity applied over it, but nothing more than that. Okay, okay. However, this guy, even if it has a receptive field of 5 by 5 as this one, it's actually the linear combination of information. Okay, so this is a linear combination of this guy. Okay, this is a linear combination of all of these guys. Okay, it is a much more complex issue. Okay, okay, and we have covered these things when we have covered the. So let's come back here. Okay, so for example, this is a product of a linear combination of this one and this one and this one and this one. This guy is a linear combination of some of the features here. Okay, okay. Okay. Even if I increase my receptive field, I might not be able to produce this kind of a relationship. That's what we're talking about. Okay. So it's not just a receptive field, it's a hierarchical relationship that doesn't exist here. The shallows do not have a hierarchical relationship, and we have covered that the hierarchical the shallows are even theoretically able to represent any function might not be attainable that well. Okay, we have already covered that. Okay, so what we need. Okay, so it's deeper only the thing we can do. Okay, so but deeper means more complexity, and deeper also means that we need more parameters. Okay, so there's a paper, there's a publication on Distill. It's a very interesting form of publication. Papers do not introduce new methods. They are more inclined towards creating more understanding of the material. So do look at the distill.pub. I really like that venue. Have a look at the papers.
they spend a lot of time trying to make things understandable to the readers, and that's how they published. Okay, so they're more inclined towards increasing the understanding of the people rather than just introducing a new technique. So they last year they published this study where they were trying to understand the relationship between the receptive field and the depth. Okay, I think so. We missed one of the slides. So okay, so let's do this slide and then come back. Yeah. सर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्वोल्यूशन को कह रहे हैं. Convolutions are the linear combination. तो पुलिंग भी उसी के अंदर है. पोलिंग जो है लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होता. इसका मतलब है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम सिर्फ कॉन्वोल्यूशन को कह रहे हैं. इस एग्जांपल के केस में सिर्फ एग्जांपल दे रहा था आपको. मैं एग्जांपल ये दे रहा था कि क्या मैं रिसेप्टिव फील्ड इंक्रीज कर दूं सिंपली फिल्टर्स का साइज इंक्रीज करके. तो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा था कि फिल्टर का साइज इंक्रीज करने का मतलब ये है कि हम फिल्टर साइज बढ़ा रहे हैं. रिसेप्टिव फील्ड इंक्रीज करने का मतलब ये है कि मैं एक बड़े पोर्शन पे देख रहा हूँ. तो रिसेप्टिव फील्ड एक तरह से ऐसे इंक्रीज की जा सकती है कि अगर मैं अपनी कन्वोल्यूशन डेप्थ इंक्रीज कर दूं तो उसकी रिजल्टेंट की वजह से मेरी रिसेप्टिव फील्ड बड़ी हो जाए, या फिर मैं अपना फिल्टर साइज बढ़ा कर दूं, उस केस में मेरी रिसेप्टिव फील्ड बड़ी हो जाए. ठीक है. सिर्फ फर्क ये आता है कि अगर मैं डेप्थ इंक्रीज करूं तो उससे हायरार्किकल कॉम्बिनेशंस बनेंगे जो कि बहुत मजीद कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और इस केस के अंदर मेरे पास शैलो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ शैलो फीचर्स आएंगे. ओके, so it's not a receptive field, it's a complexity also we require. Now the question is how the depth affects the receptive field. So they did this study where they took the different networks जो exist करते हैं, different architectures, and they plotted their image net top one accuracy. Okay, so this is the receptive field sizes. जो ये different algorithms हैं, ये different architectures हैं, LX and VG, inception को पढ़ेंगे बाद में, but they all have a different depths and different receptive fields. So they said कि अगर receptive field के लिहाज से अगर मैं इनको sort कर दूं तो accuracy कितना फर्क आता है. Then notice this thing that this mobile net and VG have almost same accuracy. Okay, VG की accuracy थोड़ी सी बड़ी है. The circle's radius indicates the receptive field size. इसका कहते हैं computation cost. Okay, FOPS. Okay, the computation cost is represented by circle. So the larger the circle, more expensive it is to run. The most expensive आता है कि इसकी depth बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, so to perform multiple operations. उसकी वजह से complexity, उसकी computation cost increase कर जाती है. ठीक है. So they said actually that if you plot this kind of a logarithmic, if you plot this kind of relationship, this is a logarithmic relationship. Okay, and it indicates that the receptive field को increase करने से, ठीक है, you can still get, अगर receptive field increase कर दें, कहते हैं, okay, how should I put this thing? Okay, so even if mobile net actually has the same almost similar receptive field as VG. Okay, however, they are not they manage their depth much more efficiently than the VGG. Okay, so if you can manage your depth much more efficiently than others and have similar kind of receptive field, your accuracy appears to be similar. Okay, now this is a very bold statement to make. Okay, but this is a relationship they see. Okay, this is a relationship they see actually, that receptive field is increasing. Okay, and these guys are having a similar kind of an accuracy. Receptive field increase करती जा रही है तो उनकी accuracy improve करती जा रही है. Okay, ठीक है. Definitely, this is not the exact thing to say because there are other factors are there. Okay, for example, number of filters which are important. कि हर layer में filters कितने मौजूद हैं. Number of layers को किससे control किया जा रहा है. Filters की width कितनी वैसे define की गई है. They are all important factors. Okay. However, their conclusion was that networks which can efficiently generate larger receptive field may enhance recognition performance. Okay. I will encourage you guys to go to this link and read about it. उसका पूरा रीड करें. खासतौर पे उन लोगों ने जिक्र किया कि किस तरह रिसेप्टिव डिफरेंट फंक्शंस की रिसेप्टिव फील्ड किस तरह फर्क होती है. Do have a look at that. Okay. For example, let me ask you, ड्रॉप आउट का रिसेप्टिव फील्ड क्या असर पड़ेगा.
ठीक है, आप लोग सोचिएगा। कहते हैं टी इफ क्विज आर रेडी, कैन वी डू द क्विज? मीन वाली से हमें ये समझ लगती है कि हम ये कह रहे हैं कि हर फिल्टर ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया था, जबकि ऐसा नहीं है। मे भी शायद एक फिल्टर बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था आउटपुट जनरेट करने को, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन हम मीन ले रहे हैं तो उसकी वो तो 0 प्लस a प्लस b डिवाइड बाय 4 जो होगा वो a बाय 4 b बाय 4 हो जाएगा और c का 0 रहेगा। सही है। हम फॉरवर्ड प्रोपगेशन की फॉरवर्ड प्रोपगेशन की बात है। सॉरी सर, मैं हम बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, हम बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, हम सर बैकवर्ड की पहले बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड की बात नहीं कर रहे। अच्छा हम भी बात थोड़ी देर बात कर रहे हैं, हम खत्म कर ले पहले थोड़ी सी सेपरेट फील्ड को। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। Oh yes. So okay. So they can see that the growth of receptive field also increases the accuracy. ImageNet is a huge data set. और give me 1 second. मेरा कंप्यूटर इस टाइम पे सोना चाह रहा है। Can you guys still see the slides? Yes, sir. Yes, sir. Okay, guys. Okay, so okay, so when I increase my receptive field, I see the high increase in accuracy also. Okay. However, we should note that there are other factors also. Look at for example, width of a filter, kitna hai, number of filters kitne मौजूद है, उनके अंदर कितनी complexity exist करती है, all of those things. Okay. However, their general consensus was this one, that if the networks which are effectively generate large receptive fields, they may result into enhanced recognition performance. Okay. So this is also the table. So this is the oldest one we know about. This came in 2012. Okay, and these are the new ones. ResNet, Inception 1, Inception ZZ 1. All of these are the new ones. So they calculated their receptive fields. So you can see they have a large receptive field. Okay, stride padding like no okay. So but you can see that their receptive fields are increasing. Okay, but they also don't tell you that इनकी depth भी increase कर रही है. Okay, this guy is only 16 layers. Okay, 16 units of layers, but like this is a very small depth. This is a depth more than that one. This guy is actually much more similar to this one in terms of layers, except that is created to compute values much more faster. And this can indicate that this guy has a similar kind of effect like this one. Okay, I mean, going back. This guy, so the small net guy has a similar receptive field like the ImageNet. Okay, and it has similar accuracy than it's similar receptive field as the VGG, except that it manages its receptive field much more better than the VGG. So you can see its complexity VGG is complexity ज़्यादा है, जबकि MobileNet की complexity कम है. So you can see that, but its accuracy is very similar to VGG. Okay, so this is again the representation. अच्छा तो only the two things हमने डिस्कस किए. हमने डिस्कस किया कि या तो डेप्थ इंक्रीज कर दें या फिल्टर साइज कम कर दें. So these guys came in 2016 and they said that we can have something called dialectic convolution. Okay, so dialectic convolution, you don't change the size of the filter, just change how it is applied. Okay, so if you look at the animation below, you can see this is general convolution going around. So you have these 3x3 guys going on to the location and they are being multiplied on the information below. Here, instead of that, you have this information and empty space and information and empty space. Okay, that would be much more clear. Okay, so here you have so instead of having a filter like this one, you create a filter like this one. Okay, so you have these empty spaces in between them. Okay, so now receptive field is increased, but parameters remain same. Okay,
So learned parameters remain same, but your receptive field is increased. Okay, so this is now, this you can see now in this animation. Okay, so sir? this, yeah, सर ये yes. जीरो पैडिंग की है बाहर अब जीरो Next slide जीरो पे। की हुई। ये सारा जो एरिया बाहर खाली है तो आप इनकी बात, इधर की बात कर रही हैं? नो सर नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड की। ओ ये Yes. जो 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 यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है उसको बोल रहे हैं। जो रेड Yes, sir. डॉट्स हैं, ये जो रेड डॉट्स हैं, ये दीज आर द लर्न पैरामीटर्स ऑफ फिल्टर। ठीक है, जो एम्प्टी स्पेस है वो जीरोस हैं ये वाले। नो सर ये वाइट जो चेक्स बने हुए हैं दे आर जस्ट टू शो ऑफ कि हो क्या रहा है। They're nothing, they're just for representation, they're just for visualization, nothing more than that. तो फिल्टर सिर्फ यही है। तो अगर हम डायलेट करें तो दिस, डायलेट ना करें तो दिस फिल्टर वाज दिस साइज, दिस इज 3/3, डायलेट कर दे तो अब वो इस साइज पे चला गया। ठीक है, बट पैरामीटर्स रिमेन सेम। ठीक है, डायलेट का मतलब डाइल्यूट करना, बड़ा करना। ठीक है, डाइल्यूट करते हैं ना, लस्सी बड़ी करते हैं, पानी डालते हैं। ठीक है सर प्रैक्टिकली ये टेक्निक कितनी फिजिबल है, कितनी Oh, बेहतर it's है? very practical. It's very practical, and it is very popular. It's very practical. It's very practical, and people have done some interesting stuff using this one. So not only this one. So you can have you could be at the same depth, and you can have this receptive field, you can have this receptive field, or you can have this receptive field, and then you can combine all the information together. Think how powerful this is. Sir, try to It include. depends upon this thing. Let me reiterate. It depends upon this thing. अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है, इनफ बड़ा है, तो उसमें कंटिन्यूटी होगी। कंटिन्यूटी होने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन के अंदर जिस पैटर्न को मैं देखना चाह रहा हूँ वो बड़ा इनफ बड़े साइज का है, तो उसके अंदर कंटिन्यूटी होगी। कंटिन्यूटी का होगा कि वो वैल्यू यहाँ पे भी तकरीबन वो होगी और यहाँ पे भी तकरीबन वही होगी। ये नहीं होगा कि वैल्यू यहाँ पे कुछ और थी, यहाँ पे कुछ और होगी और यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ और होगी। ठीक है, तो दैट्स वेयर इट इज बेस्ड ऑन। तो सर इससे क्या हम डेप्थ बचा के तो फिर यानी कि इससे हम पैरामीटर्स कम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मैंने रिसेप्टिव फील्ड बड़ी करी है, मैं नंबर पैरामीटर्स कम कर रहा हूँ। सही है, हम हाईलाइट करके सिर्फ जी अब डायलेट कुछ भी नहीं कर रहे, हमने सिंपल एक फिल्टर लिया, उसको हमने 9 में, फॉर एग्जांपल इन दिस केस जो है उसके सिर्फ 9 पैरामीटर्स थे, बाकी जगहों पे हमने 0 रख दिया। तो हम जब कन्वॉल्व करने जाते हैं, ठीक है, तो हम एक बड़ा फिल्टर बनाते हैं, उसमें हर जगह 0 रख देते हैं, इन जगहों पे वो वैल्यूज रख देते हैं और इससे कन्वॉल्व करते हैं लाइक दिस। तो फिल्टर अभी भी 3/3 का ही है। मैं अप्लाई करते हुए मैं हर जगह पे अप्लाई नहीं करता, छोड़ के जगहों पे अप्लाई करता हूँ। जी, this is not same as stride. Remember that. This is not same as stride. क्योंकि stride के अंदर पूरा फिल्टर जगह छोड़ता रह जाता है, यहाँ पे मैं फिल्टर के अंदर बड़ा कर रहा हूँ स्पेस छोड़ते हुए। सर अगर हम पुलिंग पहले कर लें और कमीशन बाद में कर लें तो वो सेम होगा? नहीं, सेम रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि पुलिंग जो है वो आप एवरेज पुलिंग करेंगे या मैक्स पुलिंग करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू को उठा लेगा वहां से, और मैक्सिमम वैल्यू लेफ्ट पे थी या राइट पे थी, तो दोनों सूरतों में एक ही वैल्यू आएगी ना। इस केस में दोनों का रिस्पांस फर्क होगा। सर दैट मींस वी कैन से कि फिल्टर साइज इज चेंज ड्यूरिंग कैलकुलेशंस। फिल्टर साइज नॉट चेंज, फिल्टर अभी 3/3 का फिल्टर डायलेट हो गया, उसकी रिसेप्टिव फील्ड चेंज हो हां लेकिन 9 चेक्स लेने लग पड़े ना अब। 9 स्पेसेस लेने लग पड़ा ना वो। ओ हाँ, 9 से ज्यादा, 9 में 9, हाँ 9 भी नहीं है बल्कि हाँ 6 में 6 सही है। ठीक है, एक्चुअली ये 7 में 7 है। Okay, so depending upon how you want to dilate, you can have different formulation of this one. Okay, I can have these guys on the corners, I can have them in the center. Okay, so depending upon where I want to put the zeros, I can have a different filters on this one. Okay, but these guys came and they said these guys came in 16, I think 2015 and 16 जी सर लास्ट स्लाइड में ये जो नीचे लेफ्ट राइट और ये एक साथ एल की वैल्यूज लिखी इसकी समझ नहीं।
ओ लेफ्ट का मतलब कि L इज इक्वल टू 1 कि यहाँ पे हमने कोई डायलेक्शन नहीं की, ठीक है। मिडिल इमेज ये वाला है, L इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि हमने 2 डायलेक्शन की है, ठीक है। डायरेक्शन का फंक्शन दिया था किसे डायलेट करना आपने, ठीक है। L इज इक्वल टू 4 राइट के ऊपर इमेज को रिप्रेजेंट करता है कि हमें डायरेक्शन अब ज्यादा करती है, बस सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं बट माय रिसेप्टिव फील्ड इज इंक्रीजिंग बिकॉज़ माय डायलेशन इज इंक्रीजिंग। सर ये एल से मुझे जहाँ तक समझे इसमें यही है कि हमारे जो फिल्टर्स के पॉइंट्स हैं वो 2L इज इक्वल टू 2 है, तो मतलब हर पॉइंट उसे दूसरी पोजीशन पे है राइट पर में। Okay, so I was saying correctly in that respect कि हम जीरो से का फायदा नहीं होता, but to explain something I need to first put हम कर, okay, जब उसको implement करने जाते हैं तो there is no point putting up the zeros, we just sample them that way, apply our filter there, okay, so he is right, हम लोग जीरो से just to make you guys notice, I need to tell you कि यार इनको इग्नोर करें, इग्नोर का मतलब क्या है कि I'm putting zeros there for example, अगर मैं एक फिल्टर बहुत बड़ा कर दूं तो मैं हर जगह पे जीरो रख दूं, बस ये लेने में पैरामीटर्स रखूं, ठीक है, then it will be something like I'm doing the dilation, okay. So there was a question somewhere, कोई क्वेश्चन कर रहे थे? सर आप सुन सकते हैं? हाँ जी मैं सुन सकता हूँ। सर ये जो डायरेक्टेड कन्वोल्यूशन है ये ऐसे ही है कि हम जो इनपुट है उसको डाउन सैंपल कर रहे हैं, सिर्फ वो अल्टरनेटिंग जो रोज हैं या कॉलम्स हैं उनको सेलेक्ट करके। तो इसमें स्पेशल क्या है कि हम वैसे भी तो जैसे इमेज की रेजोल्यूशन कम करने के लिए उससे पहले डाउन सैंपल कर सकते हैं, तो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस, रिजल्ट अच्छे आना स्टार्ट हो जाते हैं। Let's have a look at, okay, if you downsample something, what happens? You pick this element up, okay, you miss this element and then you pick up this element, है ना? Is that right? कौन बात कर रहे थे साहब हमारे साथ? हेलो भाई, देखिए अगर हम सब सैंपल करेंगे तो क्या होगा? This element up, miss this guy up, then use this one, ठीक है? This is not for the related company, ठीक है? Direct might use this information and might use information, and you can see this from this example. It's much more simple. It's much more similar as subsampling while applying convolution at one location, but it's not same as subsampling the whole volume. Yes sir, ठीक है। They are very right. We don't put zeros there, but that's going to increase our computational cost. That's going to increase our memory. Okay, we can apply. जब apply करने जा रहे हैं, तो we can apply करने जा रहे हैं, we can just miss that or set up in that way कि हम उसको process ना करना पड़े. ठीक है, सही है. Okay, but however, to have you guys understand what is going around, it's much easier for me to tell you कि यार यहाँ zeros शायद पड़े. ठीक है. Okay, so let's move forward. सर इसके अंदर ये जो ब्लू So एरियाज हैं this ये paper क्या came and they रिप्रेजेंट said करते हैं? so the question is if I have a थोड़ा सा अपना नाम बताया करें. चलो सर इस अगली स्लाइड्स के ऊपर जहाँ पे हमारे पास एल की वैल्यूज थी उसके अंदर ऊपर इमेजेस में जो ब्लू सेल्स हैं हमारे पास पे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पे ब्लू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डार्क ब्लूज की बात कर रहे हैं आप? सर नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे एल की वैल्यूज दी हैं, अगली साइड की बात कर रहे हैं. जी सर यहाँ इनकी बात कर रहे हैं आप? We're not saying, we just doing the dilation, we're ignoring those and we're taking up these guys जो कि हमारे learned parameters होंगे.
ओके ये जो हमारे पास रेड पॉइंट्स हैं, हमारा फिल्टर यहीं पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कलर चेंज किए हुए हैं इसकी समझ नहीं, नहीं हमारा आई। पैरामीटर अप्लाई हो रहा है, बाकी हम लोग इन पैरामीटर्स को लर्न कर रहे हैं, हम लोग बाकी पैरामीटर्स को लर्न नहीं कर रहे हैं। ओके, समझ नहीं आई, रिपीट कीजिएगा। इज इट पॉसिबल वी कैन लेट मी कंप्लीट दिस थिंग, हम लोग क्वेश्चन आंसर में काफी सारी चीजें ना मिस कर जाते हैं, हम लोग काफी ठीक है सारे सर। पीछे रह जाते हैं। ठीक है, लेट मी फिनिश दिस थिंग अप and then more questions about this one during the office hours. ठीक है, ओके सर। okay, so the question is this: if I receptive field is increased, I'm done. ठीक है, receptive field is increased, I am done. Okay, so these guys in 2016 studied the receptive field and they said कि receptive field output role, and that is called effective receptive field. So let me give you an idea. Suppose this is a large receptive field you have. Suppose this is 5 by 5. 4, let's make it 5. Okay, 1, 2, 3, 4, and 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so now this kind of receptive field of 5 by 5. ठीक है, but is it possible कि मैं सब जगह पे zeros रखे हों और सिर्फ यहाँ पे values हों? It's possible ना? It's possible that only these two columns have all the values and these all guys are zeros. And it's also true that my filter zeros around have small values here. छोटे से area में values हो, बाकी सब जगह पे zeros हो. Okay? Okay. So this means that my receptive field, मेरी जो receptive field में design की है, उसकी receptive field तो वो है ना, हो सकता है 15 में, ठीक है, मगर उसमें से सिर्फ एक छोटा पोर्शन है कि मेरा इंटरेस्ट हो, बाकी सबके अंदर इंटरेस्ट ना हो. So they call this effective receptive field. Okay, so which part of a receptive field you're looking at? Okay, and they found actually that most of the time the receptive field is just Gaussian in the center. Okay, and actually they found out that as the depth is increasing, the receptive field remains smaller and only isolated a small area, and rest of that is all zeros. Okay, so मैं information थोड़ी सी ही देख रहा हूँ कि कहते हैं मैं अपनी डेप्थ इंक्रीज करता जा रहा हूँ. मैं पिछले एग्जांपल में शो किया है कि डेप्थ इंक्रीज करते जाए, सॉरी रिसेप्टिव फील्ड इंक्रीज करते जाए तो मेरी एक्यूरेसीज इंप्रूव करना शुरू हो जाती हैं. वो करने के लिए मैं अपनी डेप्थ इंक्रीज करता जा रहा हूँ और डायरेक्ट कन्वर्शन करता हूँ और बड़े कॉम्प्लेक्स काम करता हूँ, मगर आई कीप एंडिंग इन एन इफेक्टिव रिसेप्टिव फील्ड ऑफ वेरी स्मॉल. Okay, so जब छोटी सी रिसेप्टिव फील्ड होगी तो क्या होगा? You will be only having some edges, some curves, something like this. However, thankfully, after training, the receptive field changes, बड़ी हो जाती है. However, if the receptive field is zero होगा, suppose करने कि ये फिल्टर के अंदर यहाँ पे तवज्जो नहीं दे रहा था, यहाँ पे सब zeros हो जाते हैं, तो क्या होगा? तो इसको लर्निंग में बहुत टाइम लगेगा. इसको अगर मैं इसको पहले ही बढ़ा के इफेक्टिव, अगर मैं अपनी इफेक्टिव रिसेप्टिव फील्ड को बड़ा कर दूं तो मेरी लर्निंग तेज हो सकती है. एंड दैट्स व्हाट दे डिड. दे सेड कि अच्छा हम इफेक्टिव फील्ड रिसेप्टिव फील्ड को बड़ा कर देते हैं तो उससे का शायद फर्क पड़ना शुरू हो. ओके, ठीक है. However, the techniques they used did not show much more benefit. Okay, they said कि इससे फर्क पड़ना चाहिए, but the results they showed didn't the techniques they showed in the way such that they increase the effective receptive field during the training, during initialization, it didn't give them that much speedy learning as they wanted to be. ठीक है, let me go through this again. हम लोग जितनी बातचीत कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप अपनी रिसेप्टिव फील्ड इंक्रीज कर दें,
रिसेप्टिव फील्ड को आप इंक्रीज करते जाएं तो आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज करना शुरू कर देती है. दिस इज लॉगरिथमिक रिलेशनशिप दैट शोस दैट every day other things that take in consideration, but this is one of the factors too. Okay, and however उसको इंक्रीज करने के लिए हमने कहा कि चलें अब डेप्थ इंक्रीज करना चाहते हैं, डायरेक्ट कन्वोल्यूशंस कर लें. But these guys came, they came in 2016. They said कि अच्छा आप रिसेप्टिव फील्ड बड़ी करते जा रहे हैं, बट इनिशियली जो आपकी इफेक्टिव रिसेप्टिव फील्ड होती है वो बहुत छोटी सी होती है. तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े एरिया में देखने की कोशिश कर रहे हैं. आप इस तस्वीर के अंदर घोड़े को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मगर बुनियादी तौर पे आपकी बड़ी रिसेप्टिव फील्ड जो है ना वो सिर्फ इतने से हिस्से को देख रही है, बाकी इस चीज को नहीं देख रही. ठीक है, आप गाड़ी को देखना कोशिश कर रहे हैं तो वो पूरी गाड़ी को देखने जाए एक छोटे से हिस्से में देख रही है. इवन आपने डेप्थ रिसेप्टिव फील्ड बड़ी भी करती है तो पूरी गाड़ी को देख नहीं पा रही शुरू के अंदर. दे डू शो कि आफ्टर द ट्रेनिंग रिसेप्टिव फील्ड बिकम्स बिगर. ओके, बट द आइडिया इज दैट कि हम शुरू में रिसेप्टिव फील्ड को बड़ा कर दे किसी तरीके से तो ये मसला ना होगा हमारा. ओके, द टेक्निक दिस शोड वाज नॉट इफेक्टिव but not effective in increasing the convergence speed. Yep. सर जब हम डेप्थ को इंक्रीज करते हैं तो हमने लास्ट में फिगर में देखा भी था जो इमेजेस बनी हुई थी कि हमारे पास मुकम्मल फेस आ रहा था. तो जो बैक में थी पहले सेकंड उसमें जो था उसमें लिप्स और आईज इंडिविजुअली आ रहे थे, बाद में एक मुकम्मल फेस बन रहा था. तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि रिसेप्टिव फील्ड जो है वो बड़ी हो रही है लर्निंग के बाद देखिए ना, यही चीज शो की है कि ट्रेनिंग के बाद जो है रिसेप्टिव फील्ड बड़ी हो जाती है. This is an inception that this was made by Google and ये Google ने के ऊपर बेस किया था मेन आइडियाज इसके. तो this is inception. So this is inception net, and there you can see that what they do is that they have a different receptive fields or different sizes of convolution filters. यहाँ पे 3x3 की max pooling हो रही है. Okay, and they have this 1x1 convolution, they have 3x3 convolution, 5x5 convolution. The question, let me ask you a question. What is this 1x1 convolution doing? Okay, so what is this 1x1 convolution doing? Okay, so 1x1 convolution is actually doing the feature fusion. Okay, we will talk more about this. Okay, so what we do is we apply this 1x1 convolution. इससे receptive field increase नहीं करती, इससे receptive field थोड़ी सी increase करेगी, इससे receptive field बहुत ज़्यादा increase कर जाएगी. इससे भी receptive field increase करेगी कि हम max pooling कर रहे हैं, and then we're going to concatenate them together. Okay, so then I need to actually resize all of my features. इसका feature volume यहाँ से आएगा, वो different होगा, यहाँ से आएगा फर्क होगा, तो यहाँ से आएगा फर्क होगा. So I have to actually resize them or pad my, either I pad them or I resize them and somehow I make them all same. Okay, and then I can concatenate them. So now I have a feature volume. यहाँ पे आके मुझे feature volume में जैसे एक हिस्सा जो है वो 1x1 convolution से आ रहा है, उसका दूसरा हिस्सा जो है कुछ channels जो है वो इससे आ रहे हैं, 3x3 convolution से आ रहे हैं, कुछ channels जो है वो 5x5 convolution से आ रहे हैं, कुछ channels जो है वो 3x3 max pooling से आ रहे हैं. ठीक है. Okay, so what is this 1x1 convolution? So convolution. So let me talk about what is the multiple input channels are doing. So if we have a filter like this one, okay, this guy actually gets multiplied by this one portion of input, and this guy gets multiplied by this portion of an input. So which is shown here. Okay, so this is multiplied with this guy, this multiplies this guy, and then we add them up. So this is the result we get. Okay. Okay, तो जब मैं फिल्टर साइज अपना छोटा कर दूंगा तो स्पेशियल इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा. So there would be one scaling of just this guy then, okay, and scaling of just this guy by this element. Okay, that's what is going on. और फिर हमको summation कर देंगे. So actually this is a 1x1 convolution filter. So 1x1 convolution filter में I will be just scaling this value by this guy, okay, this value by this guy, and this value by this guy, and adding them up. Okay, so depending upon the convolution filters, मेरे अब ये लाजमी नहीं है एक ही 1x1 convolution filter हो ना, I can have hundreds of 1x1 convolution filter. तो मेरे चैनल डिपेंड करेंगे जितने convolution filters यहाँ पे इस्तेमाल करूँ. Okay, ठीक है, अगर यहाँ पे 100 convolution filters होंगे तो यहाँ पे 100 ही मेरे पास channels आ जाएंगे. Okay, ठीक है. Okay, but convolution filter is doing what? Is doing a weighted summation of channels of input.
ओके सो अगर RGB है तो 1x1 फिल्टर क्या कह रहे हैं कि R की क्या वैल्यू होनी चाहिए, G की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, D की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज डूइंग। अगर आपका डेप्थ मैप है और RGB है तो दिस 1 by 1 convolution try to fuse the information from RGB and the depth, okay ठीक है। सो where it is used, it's used in multiple ways. For example अगर आपके पास फीचर वॉल्यूम पहले बहुत बड़ा आ रहा है, अगर बहुत बड़ा फीचर वॉल्यूम आ रहा है, सपोज करें 1000 उसके चैनल्स आ रहे हैं और आप कहते हैं कि यार मेरे पास इतनी मेमोरी नहीं है कि मैं आगे इसमें फिल्टर्स लगा सकूं, क्योंकि अगर 1000 चैनल आ रहे हैं तो जितने फिल्टर्स होंगे उनका साइज अगर 5 में 5 है तो 5 में 5 में 1000 होगा, ठीक है। So what I do is that I use my convolution filter, I use my 1x1 convolution filter and say from these 1000 different channels make a combination of 100 channels. तो अपनी dimensionality reduction कर सकता हूँ मैं अपनी, ठीक है। तो इसको कहते हैं bottleneck layer के तौर पर इस्तेमाल करना। So I have huge feature volume coming from the previous layer, उसको आगे भेजने से पहले मैं उसमें से फीचर सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ तो आई विल यूज जस्ट 1x1 कन्वोल्यूशन और मैं उसमें से 1000 या 100 या 200 जितने भी चैनल्स देना चाह रहा हूँ वो पूल को मैं उसमें से कन्वर्ट करके निकाल लूंगा, ठीक है सही है। तो this allows me to the fuse the features, okay। However this could be used in reverse also. So for example I have an RGB, okay, and I want to increase the interesting combinations of RGB, okay, and I want to create 100 different combinations of RGB, then I can have input as a three channel image, RGB image, and or filters 100 कर दूं, ठीक है, और हर फिल्टर के अंदर जो साइज होगा 1 by 1 by 3 होगा, ओके 1+1 डेप्थ उसकी 3 होगी, ठीक है। आउटपुट जो आएगी there will be 100 different combinations of RGB in it. So I can use in mixture of these two, I use the bottleneck features बहुत ज्यादा आगे फीचर सिलेक्शन कर लें, ठीक है, और फीचर इतने इंटरेस्टिंग नहीं आए, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बना लें। I can use it both ways. However, receptive field is चेंज नहीं होती, okay। अच्छा, so this is coming back to I can have different combinations of this one. So we now अमूमन तो लोग रिसेप्टिव फील्ड को इतनी डिटेल में या डेप्थ में पढ़ाते नहीं है, इनडायरेक्टली पढ़ाते नहीं है, okay। But I think so after covering the receptive fields, studying the architecture becomes much more interesting, okay। So give me 2 minutes and I will be back by for the slides of an architecture. Actually, give me just 1 minute. So think about what is going on. So suppose कह लें कि मेरी इनपुट वॉल्यूम के ऊपर सिर्फ इनपुट के ऊपर सिर्फ एक ही चैनल था, okay, there was D is equal to 1, okay। तो 1+1 जो फिल्टर होगा that will be just one element and nothing else, okay। So this guy would be just W1, ठीक है। So what is this guy would be doing? Whatever the value here, it will be multiplied by all the elements here, and for every element I will get one output. So मेरी output जो होगी उसका size that will be exactly same as this guy, ठीक है। This matrix should be exactly same as this one, and element here, for example, this guy is if it's A1, okay, this A1 is A is location कर लेते हैं I J, सर पॉइंटर विजिबल नहीं है, पेन विजिबल नहीं, जी इस टाइम पे कौन सी साइड नजर आ रही है, इस टाइम कौन सी साइड नजर आ रही है आपको? 1x1 कन्वोल्यूशनल सर है, विजिबल है, उसके अंदर पेन नजर आ रहा है आपको? यस अभी आ रहा था। अच्छा, लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? सर इसमें एक टाइम में एक ही वैल्यू होगी ना 1x1 के जो फिल्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल 5 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि हम अपने इमेज को 5 टाइम्स स्केल कर रहे हैं। सर लिखा हुआ नजर आ रहा है, लिखा हुआ नजर आ रहा था ना, या हाँ, तो मेरा जब पेन नजर हो, जब अनफॉर्चुनेट जब पेन होता है तो यू डोंट सी द पॉइंटर, अनफॉर्चुनेटली जब एक में से एक ही चीज विजिबल हो पाती है। अगर किसी को कोई ऑप्शन आता है तो बता दें, मगर कहते मैं जब भी पेन ऑन करता हूं तो वो पॉइंटर खत्म हो जाता है, ठीक है। सर जब आप लिख रहे होते हैं ना तो आप रेफरेंस दे रहे होते हैं स्लाइड में किसी चीज का, तो वो पता नहीं चल रहा होता सर मैं क्या कर रहे होते हैं। मैं उसको उस तरह कर दिया करूंगा। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। कहते मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप में से कोई किसी के पास हो ना कि किसी दो चीज नजर आ सकती है, डू टेल मी, ठीक है, ओके। तो दैट विल एक्चुअली, अगर आप में से कोई तरह हिम्मत करे और सर्च वगैरह करके ऑप्शन ढूंढ ले तो डू शेयर। शॉर्टकट की यूज कर दिया, शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल L और कंट्रोल P। नाइस, कंट्रोल P नहीं हुआ यार,
पॉइंटर के लिए P होता है अगर आपने स्लाइड्स ओपन की हुई है पावर पॉइंट की तो। हाँ सर लेजर मैकबुक के यूज लिए कर रहे होंगे, कंट्रोल पी से सर मैकबुक यूज कर रहे होंगे ओएस हो गया जबरदस्त, ठीक है यार, गुड नाइस, मैं की दोबारा। ओके ग्रेट। तो अगर मेरे पास कहते हैं, अगर मेरे पास नाइस गुड यार, अगर मेरे पास ये इनपुट है, ठीक है, ओके सो दिस गाय इज देयर, ओके so this is only one channel, तो ये W जो होगा इसके अंदर एक और डेप्थ नहीं होगी, सिर्फ एक ही होगा। तो अगर मिसाल के इसके अंदर वैल्यू है 0.5, इसमें हर एलिमेंट 0.5 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ओके एवरीवन गुड, ओके। तो अगर मेरे पास मल्टीपल फिल्टर्स हो तो सिंपली उतने चैनल्स बन जाएंगे यहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर इसमें 1 by 1 के अंदर हमें बायस डालने की कोई जरूरत होती है? आप डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं। मैं फिलहाल अगर उसे इग्नोर कर दें तो सिर्फ उसकी रिलेशनशिप सीखना चाह रहे हैं, मेरे बायस होता है, कन्वोल्यूशन फिल्टर्स के अंदर भी बायस होता है, तो सब कन्वोल्यूशन फिल्टर्स में होते हैं, तो 1x1 में भी बायस होगा, ठीक है। मगर फिलहाल हमने इसको इग्नोर कर दिया टू हेल्प यू गाइस अंडरस्टैंड, ठीक है। सर अगर इमेज के ज्यादा चैनल हो, मतलब 3 चैनल हो, तो ये वाला अभी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं? अभी आते हैं। तो व्हाट इज दिस गाय डूइंग? तो अगर ये 0.5 है तो दिस गाय इज स्केल्ड बाय 0.5 एंड हियर इफ दिस गाय वाज 0.5 इसने इसको स्केल किया, ये 0.5 में यहाँ रहती है, दिस इज 0.1 इसको स्केल किया 0.1 से और यहाँ पे रहती है, ठीक है, ओके। सो इट जस्ट created a scaled version of this guy, okay. Now if my input channel has more input कहते हैं volume has more channels, इसके इनपुट वॉल्यूम में चैनल ज्यादा होंगे तो मेरे फिल्टर की भी डेप्थ ज्यादा होगी, तो क्या होगा? दिस गाय इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय दिस गाय, ठीक है, दिस गाय इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय दिस गाय, दिस गाय इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय दिस गाय एंड देन सम इट अप, ओके, एंड दैट विल गो टू दिस चैनल। तो ये क्या कर रहा होगा? इट इज गोइंग टू क्रिएट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस चैनल्स, ठीक है। To help you understand, think about this way, ठीक है। Suppose कर लें कि this guy is A1, this guy is A2, this guy is A3, okay? सर एक ही होना चाहिए था फिर तो, इस तरह जिस तरह जिनके आपने A1, A2, A3 नाम रखे हैं, एक ही होना चाहिए था फिर। क्यों? मैं हो सकता है अगर मेरे पास RGB हो, अगर मैं इसको R कहूँ, ये G कहूँ, तो B कहूँ, तो हो सकता है कि एक फिल्टर में मैं A को ज्यादा तवज्जो देना चाहूँ और G को बिल्कुल ना देना चाहूँ। नहीं सर, मेरा मतलब है जो डार्क ब्लू और लाइट ब्लू तीन स्टैक हुए हैं ना, ये तो एक फिल्टर है, हाँ जी, ये एक फिल्टर है और ये दूसरा फिल्टर है। तो फिर अगर 1x1 की बात करें तो फिर इसको एक ही होना चाहिए था ना। 1x1 तो ये होता है, ये 1x1 है, इसकी डेप्थ तो हो सकती है ना। डेप्थ तो सर 3 चैनल्स की वजह से है ना। देखो लेकिन यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू आएगी, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू आएगी और यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू आएगी। यही बात कर रही हूँ सर मैं कि ये फिर एक ही होता है, यानी या नीचे वाला होता या ऊपर वाला होता ताकि सबको, और बाद में एक प्रोड्यूस होता, अभी इसलिए 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं ना। नहीं, 2 ऐसे प्रोड्यूस हो रहे हैं कि 2 फिल्टर्स हैं। अगर ये दूसरा फिल्टर ना हो, अगर दूसरा फिल्टर ना हो तो सिर्फ एक चैनल प्रोड्यूस होगा। वो तो नंबर ऑफ फिल्टर्स पे डिपेंड करता है ना। सही है, हाँ जी ठीक है। Okay, so in this way, actually, this guy is a linear combination of channels for this one. Okay, and this is another linear combination of these channels. So what 1x1 convolution is allowing me to do is that it's allowing me to create a linear combination of input channels. Okay, इनको fuse करने में help कर रहा है, ठीक है। तो suppose कह रहे हैं कि RGB is you don't want, आप समझते हैं RGB की इतनी information नहीं आ रही, आप चाहते हैं कि interesting combination create किया जा सकता है, ठीक है। For example, you can have a channel जिसके अंदर R और B हो सिर्फ, okay. You can want अगर there could be another channel that is more towards the yellow. Yellow is a linear combination of these one. Another could be a linear combination of sky blue, for example. आप कहते हैं sky blue color में देखना चाह रहा हूँ, तो how will you produce sky blue color? By linear combination of these guys.
So from RGB, if I increase my 1x1 filters, यहाँ पे 1000 कर दूं, 2000 कर दूं, 4000 कर दूं या 100 कर दूं, तो मेरी आउटपुट के जो वॉल्यूम आएगा, it will have a 400 different channels, okay, and each channel would be a linear combination of RGB, okay, ठीक है. So this allows me, 1x1 channel allows me to create very many other interesting combinations of input volume, okay, ठीक है. However, I can use it reversely also. अगर उस इनपुट वॉल्यूम जो है उसका चैनल जो है 1000 है और मैं सिर्फ चाहता हूं उससे 300 इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस रख लूं, then what I can do is that I can use this 1+1 convolution filters as a bottleneck. तो मेरे पास 1000 डायमेंशन इनपुट वॉल्यूम आया, मैंने 1+1 के 100 फिल्टर्स ट्रेन किए और उन्होंने आउटपुट के अंदर जो एक वॉल्यूम देंगे, दैट विल बी जस्ट नाउ 300 डायमेंशन. द डेप्थ इसकी 300 ही होगी, but स्पेशली इट विल बी सेम एज एन इनपुट वॉल्यूम. Does that answer everyone's question? सर 1+1 कन्वोल्यूशन का ना मकसद अभी तक समझ नहीं. आप सीधी तरह एक नंबर पकड़े, उसको पूरी मैट्रिक्स के साथ हर चैनल पे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इक्वल नहीं होगा 1+1 कन्वोल्यूशन के. आपके जो इनपुट साइज है वो इनपुट है आपका वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा. देखिए यहाँ पे ये शो हो रहा है कि मेरे पास अगर 3/3 का इनपुट था, आउटपुट के अंदर भी 3/3 का ही आया है, ठीक है. वो उसका स्पेशियल नहीं चेंज हो रहा सर, बट डेप्थ चेंज हो रही है. कलर जी, आउटपुट के अंदर कलर्स क्या शो कर रहे हैं? आउटपुट के अंदर आउटपुट में कलर्स शो कर रहे हैं कि ये वाला फिल्टर, ये वाला जो चैनल था, इट वाज अ रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग दिस फिल्टर ओवर दिस वॉल्यूम. ओके ओके. And this channel is applying of this filter over this volume. लेकिन सर इसकी समझ नहीं आई, 1000 अगर हमारे पास आउटपुट डेप्थ का आउटपुट आया है तो उसको 300 में कैसे करेंगे? So we all know that this guy, if this is a volume, whatever be the, and this is the output volume, suppose कर लें. This is dependent upon the number of filters, है ना? This n is dependent upon the number of filters, okay? So if I have two filters only, and this guy is 1000, then output में क्या आएगा मेरे पास? 2 की डेप्थ आएगी. 2 की डेप्थ आएगी. तो मैंने अपनी सिर्फ फीचर सिलेक्शन के तौर पे इसको इस्तेमाल किया, and I picked up only 2 important features for this one. तो मेरे पास जो वॉल्यूम आएगा उसके सिर्फ 2 मैट्रिसेस. सर ये 2 मैट्रिक्स हैं वो इफेक्टेड होंगे मुकम्मल जो लास्ट लेयर के 1000 फिल्टर थे उन सब से, because this guy has a weight for everyone here. तो फिर हम 2 फिल्टर्स तो पिक नहीं ना कर रहे, हम तो उनका इफेक्टेड आउटपुट पिक कर रहे हैं. हम जब हम डायमेंशन रिडक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम जब पीसी करते हैं या डायमेंशन रिडक्शन क्या करते हैं? हम अपने डाटा को लेते हैं और हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स लेकर देते हैं. बिल्कुल. डायमेंशन रिडक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हमने उसमें से सिंपली 2 फीचर्स उठा लिए. यस, हमने उनका एक कॉम्बिनेशन उठाया है such that 2 of them which are very important. यस सर, यस. ओके सर, that's what we are doing here. Okay, ठीक है. But at the same time, if these guys were just 3 of them, ये से सिर्फ 3 थे, suppose कर लें, these are 3 और these were just 100, suppose कर लें, ठीक है. यहाँ 3 थे, यहाँ 100 थे, दोनों से कुछ भी assume करें, ठीक है. Sorry, this is just 100 for example, okay. But these guys, this n was 1000. तब क्या होगा? देन में आउटपुट वॉल्यूम कितना बड़ा होगा? आउटपुट वॉल्यूम का फीचर्स, उसका स्पेशल साइज तो वही होगा, स्पेशल साइज वही होगा, बट उसके नंबर ऑफ चैनल्स कितने होंगे? 1000 होंगे. ठीक है. Does that make sense? यस, यस सर. ठीक है, ठीक है.
Okay, Usman is very right. हमारे जो width and height है, that will remain same. Okay, so, okay. However, because my 1+1 channel है, तो उसके वो तो कभी बाहर गया नहीं, उसके मैंने कभी वो भी नहीं किया, क्या नाम है, तो मुझे कभी भी ये नहीं हुआ कि मेरा डेप्थ क्यों कम, अगर स्पेशियल साइज क्यों कम होता है, अगर आपको याद हो तो स्पेशियल साइज से कम होता है कि अगर मेरे पास ये एक फीचर वॉल्यूम था, तो मेरा फिल्टर जब इस तरह बाहर चला जाता है, ठीक है, इस तरह बाहर चला जाता है, वो मैं कंप्यूट नहीं कर सकता। तो अगर मैं पैडिंग ना करूं तो मैं अपने फिल्टर को अंदर रखता हूं, जब मैं फिल्टर को अंदर रखता हूं तो सिर्फ इधर की वैल्यू आती है, यहां तक की वैल्यू नहीं आती, इसलिए मेरी स्पेशियल साइज कम हो जाता है, क्योंकि 1+1 फिल्टर है, तो वो फिल्टर कभी बॉडी से बाहर जाता ही नहीं है, तो मेरा स्पेशियल साइज सेम रहता है, ठीक है। अलबत्ता मेरा वॉल्यूम, उसका जो डेप्थ है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूं यूजिंग माय नंबर ऑफ फिल्टर्स। ओके, गुड। कहते हैं वी वांटेड टू स्टडी, हे गाइस, नमाज की अगर आप कंसर्न हैं, आप अपने क्लास फेलोज के साथ डिस्कस कर लें, ताकि हम उस तरीके से 10 मिनट आगे या 10 मिनट पीछे किसी तरह कंपेंसेट कर लें, ठीक है। I mean, I agree. Namaz is extremely important. कहते मज़हब के लिए कहते और वैसे भी, but I need to cover the amount of time I've been asked to deliver. This is also my religious responsibility. Also, okay, it's my religious responsibility to teach you guys for the amount of time. Okay, so you guys have to help me complete my religious obligation too. Okay, and that is possible if you guys can have a conversation among yourself and decide among yourself. आपस में decide कर लें, आपस में मिलकर मुझे कल जो है अगली क्लास के अंदर एक दफा बता दें कि 5 मिनट 10 मिनट देने हैं या आखिर में देने ना, and I will give that minute, and then you have to allow me to go above that class for that amount of time. Okay, ठीक है सर। एक्चुअली वो आज मेकअप क्लास थी, तो इस वजह से टाइम ज्यादा लग गया, तो नमाज में टाइम नहीं मिला, वरना नॉर्मली टाइम मिल जाता। ठीक है, अब मेकअप क्लास 2-3 दफा होंगी, we have to cover 2-3 classes मेकअप के अंदर है, तो आप लोग प्लीज आपस में डिस्कशन कर लें, ठीक है। we going to I have no problem giving the time, okay, Acha, so coming to the architecture, so these are the architectures we have, okay. LeanNet, AlexNet, VHG, Inception, ResNet, and ExceptionNet, and they came all different timings. Okay, this is interesting. Is that okay? Control L. Okay, yeah. So this guy came in 1998. So this is the convolution neural network. This came. It was working very fine. Actually, I remember people talking about it, and then it didn't did much. Okay, didn't create a new ripple. आया लोगों ने देखा, but it was not a big wave. It was just small ripple, and it came in that way until AlexNet came. So this AlexNet comes, and everyone starts talking about it, and then people realize, oh यार इसका काम तो 1988 में लोगों ने किया था, LeanNet की टॉपिक है ना था. Okay, and the 2 years down, Oxford guys came and said, "Oh, सिर्फ Toronto वाले अच्छा काम नहीं करते, हम भी अच्छा काम करते हैं." And then Google guys came and said, "We can do much better." Then Microsoft guys came that we can do much better, and then so on. And then the missing here is a DenseNet, which is also again the Microsoft one, and they Microsoft or Facebook one. I think it's a Microsoft one. So they are all कहते हैं एक से बढ़ के एक है, मगर चूंकि हमने सेपरेट फील्ड पढ़ ली हुई है, तो हमारे लिए समझना आसान है. Okay, well, this thing you should remember, AlexNet has a very small number of parameters, but its accuracy is also very low. Okay, top 1 accuracy is extremely low. Top 5 accuracy is still not good. VG has a top 1 accuracy, which was best at the time. Okay, but the better one is this guy. Yes. ये कौन से डेटा सेट के ऊपर एक्यूरेसी है? Oh, my apologies. ImageNet के ऊपर. Okay. Okay, so most of the time the results we report will be on ImageNet, because this was the largest data set available at the time. Okay, okay. So no, we're not going to. Okay, I think so we should cover the transfer learning, because this is important for your assignment. So okay, so these all networks are there. These all networks are already, so लोगों ने train करा के ये online रखे हुए हैं. So you can Google it and you can find the pre-trained models. जिस तरह आप अपना network train करते हैं, उसके parameters save कर लेते हैं, ताकि बार-बार आपको train ना करना पड़े. So these guys have trained their networks, and these models are readily available. ठीक है? So you can just download them and plug and play. Just remember that to download the official ones of them, do not download the unofficial ones.